everyone, how are you all are? Hope you all are doing great. Standard 3. Vikas looking around environmental study workbook and we are doing chapter 16. Chapter name is My House. This video is continuation of this chapter because I already made part 1 of this chapter. In that video, I explain you till question in short, one or two sentence. So today I'm going to explain brief question 8 number. Answer the following question briefly. So let's concentrate here. Question number 1. What care has to be taken by those who are living in the house made up of bamboo or wood? Answer is point number 1. Continuously alert during summer, winter and rainy season. So we have to alert with this summer, winter and rainy season because this house is bamboo's house. Second number, cooking on a mud chula should not be done. So in bamboo house we can use the mud chula. मड चूल्हा में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फायर यूज़ होते हैं. So we can't use, it should not be used under bamboo's house. Third number, fear of insect. It's a fear of insect क्योंकि ये बैम्बू और वुड के घर हैं तो उसमें तुरंत ही इंसेक्ट लगने का, वॉर्म्स लगने का हम लोगों को खतरा होता है, तो उनके अंदर इंसेक्ट और वॉर्म आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. We should not be kept very heavy furniture or luggage in the bamboo or wood house. So this is the bamboo house or wood house. This is not pakka house. So we can't use or we can't keep very heavy furniture or luggage in the bamboo house. This is not secure for us. That's why. Now come on next page. Come on next page. Question number 2. Why are houses made on bamboo's pillar where Bhupen lives? Where Bhupen lives, why the almost houses are made of bamboo's pillar? So answer is Bhupen lives in Assam. It rains very heavy in Assam. Bhupen's where the Bhupen lives? Bhupen lives in Assam. Where in Assam, and in Assam it's very heavy rain. So houses are constructed on bamboo pillar so that they are high above the ground and protect from the rain water. आसाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है और भूपेन कहाँ रहता होता है, आसाम में रहता था. सो भूपेन्स का जो घर था, आसाम में जो मोस्टली घर होते हैं, हाउसेस जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो बैम्बूस के पिलर से कंस्ट्रक्ट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ वो लोग बैम्बूस के पिलर्स लगा के वो ग्राउंड से बहुत ऊंचा मात्रा में वो लोग घर बनाते हैं. सो दैट इज़ ग्राउंड एंड दे प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वाटर. सो जब भी पानी की भरती आती है उन लोग का घर रेन वाटर से प्रोटेक्ट हो, इसलिए वो लोग ज़्यादा पिलर लगा के अपना घर ऊंचा हाई फ्रॉम ग्राउंड बनाते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. What kind of roof of Bhupen's house have? Why are they made like this? So answer is Bhupen's lives in Assam. We all know it rains very heavy in Assam, so the houses are constructed with sloping roof so that rainwater does not collect on top of the house and can flow away easily. That's why Bhupen's that's kind of roof to Bhupen's house. So that's the water. So the house are constructed with sloping roof. So that's rainwater does not be collect on the top of the house and can flow away easily. That's why. Okay. Now see the next question. Question number 5. What are the similarities in the roof of Chameli's and Bhupen's house? Answer is Chameli stay in Manali and Bhupen stay in Assam. Since both these areas receive heavy rainfall, the roof of their house are slopy. This is the mainly similarity. Where the Chameli lives, Chameli stay in Manali and Bhupen stay in Assam. So this is the both area, Manali and Assam, both areas are heavy rainfall area. So वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बरसात होती है.
तो इसलिए वहाँ पे जो लोगों के रूफ़ होते हैं, जो घर के छत होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्लोपी होते हैं, जिससे कि रूफ़ में, छत में पानी जमा ना हो पाए. सो दिस इज़ द सिमिलरिटी. दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, यही सिमिलरिटी थी कि दोनों के घरों के जो छत होते हैं सेम रूफ होते हैं. किस तरह के रूफ होते हैं, स्लोपी रूफ होते हैं, जिससे कि पानी जमा नहीं हो और रेनफॉल का जो पानी होता है वो निकल जाए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन अ पक्का हाउस? इफ़ एंड वी ऑलमोस्ट वी लिव इन अ पक्का हाउस. अभी के इस ज़माने में सब कोई पक्का हाउस में रहते हैं. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? आंसर पॉइंट 1. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. Pakka house protect us from heat, cold and rain. Second point, do not have fear of robbery and burglars. So robbery का जो होता है वो हम लोग को fear नहीं होता है. After this, see the third number. Our life and protect is protected. Our life and properties is protected in पक्का हाउस. पक्का हाउस में क्या होता है, हमारा लाइफ और हमारी प्रॉपर्टीज जो होती है प्रोटेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू कच्चा हाउस. थर्ड नंबर, नॉट ट्रबल्ड बाय फियर ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स. इंसेक्ट और एनिमल्स का फियर भी पक्का हाउस में कम होता है अकॉर्डिंग टू विद द कच्चा हाउस. कच्चा हाउस के मात्रा में इंसेक्ट और एनिमल्स का फियर्स हम लोग को पक्का हाउस में कम देखने को मिलता है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पक्का हाउस. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग? आंसर. People go up in multi-storage buildings with the help of lift and staircase. So people using building in building multi-storage building हम लोग कैसे जाते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हैं और staircase यूज़ करके हम लोग बिल्डिंग में एंटर होते हैं. कहाँ? वेरी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. What care has to be taken by those who are living in mud house? Where the people live in mud house, what care should be they have to take it? Answer the point number 1. Continuously alert during summer, winter and the rainy season. They have to alert in all this season. Second number, fears of insect and predatory animals in also in mud house. mud house में हम लोग को एनिमल्स और इंसेक्ट का कच्चा हाउस होता है, इसलिए डर रहता है. थर्ड नंबर, थर्ड पॉइंट, मड हाउसेस कैन बी इजली डैमेज. मड हाउसेस कैन बी इजली डैमेज. फोर्थ नंबर, रॉबरी एंड burglary कैन बी हैपन ईजली. चोरी की ईजली वहाँ पे मड हाउस में चोरी हो सकती है बिकॉज दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउस. सो हम लोग को चोरी की भी डर रहती है कच्चा हाउस में. तो वी शुड हैव टू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. नाउ सी द 9 नंबर क्वेश्चन. हाउ इज द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस? Answer is, houseboat float on water as it built on a lake, while other houses stay firmly on the ground where they are built. So what is the difference between the नॉर्मल हाउस एंड द बोट हाउस? बोट हाउस कहाँ बना रहता है, वाटर में बना रहता है, जो फ्लोट होता है वाटर में तैरता रहता है, जो मोस्टली रेन, लेक, रिवर में देखने को हम लोग को मिलता है. एंड वाइल द अदर हाउसेस स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ground or normal houses and the water, or you can say houseboat. Okay, so this is the difference. Now see the question number 10. Would you like to live in a house like a houseboat? Why? Yes, I would like to live in such a houses because I enjoy floating on the houseboat. So we like houseboat because we like to enjoy on the river and lake. We like enjoy floating on the houseboat. हम लोग भी को भी houseboat में बैठना तैरना अच्छा लगता है. That's why we like houseboat. Question number 11. What difficulties do people who do not have a house face? So who do not have the house, the people who are poor, who do not have the house, so what difficulty they have to face? Answer.
दे हैव अ लॉट्स ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग द समर विंटर एंड मानसून. वो लोगों को अकॉर्डिंग टू सीजन बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रबल्स का फेस करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव हाउस. जिनके पास घर नहीं होते हैं, जिनके पास पक्का घर भी नहीं होता, उन लोगों को बहुत सारे ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12. वाई आर मल्टी स्टोरेज हाउसेज बिल्ड इन सिटीज? आंसर. Population in cities is more and there is less place to live in. By multiple storage building, more families can stay on a single plot. So why the people making multi-storage building now? So the main reason is population. Population in the city is more and there is a less place to live in. But by multiple storage building, more people's families can stay on a single plot. Single plot में बहुत सारे families multiple storage building में रह जाती है. That's the reason. So mostly buildings are now multi-storage building. 30 number. Why do peoples of Kutcha build wingworms, that is called bungo, to live in? The wingworm's bungo is constructed in such a way that one feel less hot in summer and is also protected from the harsh cold of winter. So this bungo is for that, for less hot in summer and also protected from the harsh cold in ऑफ विंटर. विंटर से और बहुत ज़्यादा गर्मी से हम लोग को बचाता है. दैट्स वाई द पीपल्स आर मेकिंग दिस. क्वेश्चन नंबर 14. वाई डू वी नीड अ हाउस? आंसर. With a house, every person can stay safely, protect himself from heat, cold, and rain. It is easy from persons eat, drink, sleep, and protect their family members and material, etc. So if we have house, that is the very benefit for us everyone. We can save ourselves and our family. We can save ourselves from cold, rain, and the summer, and we can sleep easily. We can this is the very benefit for us. घर है इसलिए हम लोग क्या अपने आप को समर, विंटर और रेनी सीज़न से बचा सकते हैं. हम लोग वहाँ पे सो सकते हैं, घर में हम लोग खाना खा सकते हैं, अपने सामानों को, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड अ हाउस. हम लोग को ये सारे ज़िंदगी के सारे दौर को फेस करने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई वी नीड अ हाउस. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. 9 number. Look at the pictures of various houses given below. Write 1 for kacha house, write 2 number of pakka house, write 3 for houses is heavy rainfall area. So you can see here given the picture is first is a like a hut. So this is the 1 number. Why? Because here is a this is called kacha house. ये कच्चा house है इसलिए इसमें 1 number. Second number, you can see the third number is this house is a heavy rainfall area. यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है इसलिए यहाँ का जो इसका हाउस का जो है वो बैम्बू का पिलर बना के उसको ऊंचा किया गया है कि रेनफॉल में भर्ती में पानी इसके घर के अंदर ना आ जाए. बिकॉज दैट्स वाई यू गिव है 3 number. Second number, this is the multi-storage building. So this is called pakka house. So like this you have to put here second number. Now see the next. On the next line, third number, this is the second number. Put here second number. This is pakka house. First, this is the first number because this is the hut. This is called kacha house. Here is this is also called pakka house. So second number here put. Now after this, see the last line of this. This is the bamboo's house. ये क्या है? Bamboo's pillars house है. So that's say this area have the heavy rainfall. So give their third number. This is also kacha house. This is also bungo, the first number, and this is also pakka house. So give here 2 number. Like this you have to make 1, 2 and 3 numbers according to given house picture. Hot question. On next page, answer the following question by finding the correct answer option from those given below each question and write its corresponding letter in box given in the front of each question. You can see the first question. What is the snow house known as? Snow house known as
wingworms, B. houseboat, C. igloo, and D. herd. So C is the right answer, igloo. So C here you have to write. Second number, in which state are houseboats seen? Gujarat, Jammu Kashmir, Punjab, and Bihar. So B is the right answer, Jammu Kashmir. So right here B. Third number question, what facility is there in multi-storage building from for going up? Multi-story building, which facility is given? A ropeway, B. a step well, C. wooden ladder, and lift. So D is the right answer. So right here D. After this, see the question number 4. There is a heavy rainfall in Assam, so the house there dash have terrace, have sloping roof, are triangle shaped, have a rectangle sheets. So B is the right answer. We have the Assam have a heavy rainfall, so they have sloping roof. So B is the right answer. 5 number, where is Dal Lake? So Dal Lake is the A in Jammu Kashmir, in Rajasthan, C in Assam, and in Delhi. So is the right answer in Jammu and Kashmir. So right here A. 6 number, which of the following is not special features of Kashmir? A. Shikara, B. houseboat, C. kawa, and D. igloo. So igloo is a not feature of Kashmir. So not special feature of Kashmir. So igloo is the right answer. So right here D. So here your chapter is completed, student. Hope you all understood this chapter. Complete your workbook and read and learn it given the question answer. In my next video, we will start chapter 17 of your workbook. Till then, bye bye, take care, stay safe, and stay healthy.